वेलकम टू AGPG स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। लेट्स बिगिन। एक्सपेरिमेंट 1। ऑब्जेक्टिव टू स्टडी अबाउट सॉइल सैम्पलिंग टूल्स, कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल, इट्स प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। प्रिंसिपल: सॉइल टेस्टिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट। जो हम ई सैंपल कलेक्ट करते हैं वो ट्रू एरिया का होना चाहिए। एंड द यूटिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट होता है जो हमको लेबोरेटरी एनालिसिस से ऑब्टेन होता है, वो डिपेंड करता है सैम्पलिंग प्रिसीजन पे। हैंस कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल इज़ एडवाइजेबल। और हमेशा लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहिए जिससे कि डिज़ायर्ड साइज कैन बी ऑब्टेन बाय सब सैम्पलिंग। इन जनरल सैम्पलिंग में क्या होता है, वन सैंपल का जो लेते हैं वो एवरी एरिया 1-2 हेक्टेयर होता है। However, at least one sample should be collected for a maximum area from 3 to 5 hectares. Soil survey sampling work. Samples are collected from a soil profile representative to the soil of the surrounding area. Materials required: 4 materials. First, spade or steel tube. Second, plastic bucket and plastic tray. Third, sampling bags, nylon. Fourth, label, pen and rubber band. Points to be considered when collect soil sample. First point is हमें सॉयल सैंपल को फैलो पीरियड में कलेक्ट करना चाहिए। फैलो पीरियड मीन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग और बिफोर सोइंग। सेकंड पॉइंट इज स्टैंडिंग क्रॉप में हमें सॉयल सैंपल को रोज़ के बिटवीन कलेक्ट करना चाहिए। ऐसी प्लेस को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे हम रेगुलरली फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अगर वहाँ का सैंपल लेना है तो एटलीस्ट 30 डेज़ आफ्टर हम वहाँ का सैंपल ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सैम्पलिंग हमें सेवरल लोकेशन में करनी है, एक जिग जैग पैटर्न में, ताकि हम होमोजेनिसिटी पूरी फील्ड की इंश्योर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज हमें जिग जैग पैटर्न में सेवरल लोकेशन पे सैम्पलिंग करनी चाहिए जिससे कि हम होल फील्ड की होमोजेनिसिटी को इंश्योर कर सकें। होमोजेनिसिटी मीन्स हम फील्ड का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। Fourth point is fields which are similar in appearance, protection, and past management practices can be grouped into a single sampling unit. Fifth point is collect से samples, separate samples को collect करना चाहिए फील्ड से जो कि डिफर हो सॉयल कलर में, स्लोप में, ड्रेनेज, पास्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक लाइमिंग, जिप्सन एप्लीकेशन, फर्टिलाइजेशन, क्रॉपिंग सिस्टम एक्सेट्रा। सिक्स पॉइंट इज डेड फरोज में हमें सैम्पलिंग को अवॉइड करना चाहिए। डेड फरोज में वेट स्पॉट्स, एरियाज नियर बर्न ट्रीज, मैन्योर हीप्स एंड इरिगेशन चैनल्स, तो हमें इन जगहों पर सैम्पलिंग अवॉइड करनी चाहिए। 7 पॉइंट इज फॉर सैलो रूटेड क्रॉप्स कलेक्ट सैंपल्स अप टू 50 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ। फॉर डीप सैलो रूटेड क्रॉप्स में हमें 50 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ चाहिए। एंड फॉर डीप रूटेड क्रॉप्स में कलेक्ट करना चाहिए। एंड फॉर ट्रीज कलेक्ट प्रोफाइल सैंपल्स। 8 point store soil samples in cool, dry conditions. 9 point is always collect the soil sample in presence of the farm owner who knows the farm better. इस पेज के लेफ्ट साइड में आपको ये डायग्राम बनाना है। दिस इज स्पेड, soil auger and steel tube. First point is divide the field into different homogeneous units based on the visual observation and farmer's experience. Second point is remove the surface litter मीन्स जो कूड़ा फैला रहता है उसको हम रिमूव कर देंगे सैम्पलिंग स्पॉट पे। थर्ड पॉइंट इज ड्राइव द ऑगर टू अ डिजायर्ड सॉइल डेप्थ एंड ड्रॉ द सॉइल सैंपल। फोर्थ पॉइंट इज कलेक्ट एट लीस्ट 10 to 15 spots location from each soil sample and place in a bucket or tray. ऑगर अवेलेबल नहीं है तो हम सॉइल ट्यूब या स्पेड की हेल्प से वी शेप कट करेंगे डिज़ायर्ड सॉइल डेप्थ में जिससे कि हम सैंपल ले सकें
फिर उसमें वी शेप का कट करेंगे, जिससे कि हम उसको सैंपल के रूप में यूज़ करेंगे, और बाकी जो बोथ साइड है उनको डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे। 6 पॉइंटर्स, मिक्स द taken samples thoroughly and remove foreign materials like मटेरियल्स को हटा देंगे सॉइल सैंपल करते समय, लाइक रूट्स, स्टोन्स, पेबल्स एंड ग्रेवल्स। 7 पॉइंट इज reduce the taken bulk soil to about 1 to 1.5 kilogram by quartering. 8 point is quartering is done by dividing the thoroughly mixed sample into 4 equal parts. तो जो क्वार्टरिंग हमने करी है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उस सैंपल को। द टू अपोजिट क्वार्टर्स आर डिस्कार्डेड, टू अपोजिट साइड को हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो रिमेनिंग जो 2 बचे हैं आर रिमिक्स्ड एंड द प्रोसेस रिपीटेड अंटिल द डिजायर्ड सैंपल इज ऑब्टेन। उसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें एक डिजायर्ड सैंपल साइज ऑब्टेन नहीं हो जाता। 9 पॉइंट इज क्वार्टरिंग इज डन बाय यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग द सॉयल ओवर अ क्लीन हार्ड सरफेस। यूनिफॉर्मली जो क्वार्टरिंग है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देंगे सॉयल फेस पे, एंड डिवाइडिंग इनटू स्मॉल compartments by drawing lines along and arrows the length and breadth. 10 point is used to interlocking polythene bags to store soil sample. 10 point is फिर जो पॉलीथीन बैग है उसमें हम 2 लेयर्स के बीच में लेबल डालेंगे with information like name of the farmer, location of the farm, coordinates, previous crop grown, pressed crop, crop to be grown in the next season, date of sampling, name of the sampler, etc. 12th is tie up the bag using a rubber band and send to the lab for analysis. टाई अप करके रबर बैंड से फिर उसको सेंड कर देंगे एनालाइज करने के लिए लैब में। सैम्पलिंग डेप्थ, फर्स्ट पॉइंट इज grasses and grasslands 5 to 7, annual crops like rice, groundnut, beans, vegetable, these are shallow rooted crops, so soil sampling depth is 50 to 20. Third point is cotton, sugarcane, banana, tapioca, vegetables, etc. These are deep rooted crops. The depth is 20 to 25. Fourth, perennial crops, plantation and orchard crops. 3 soil samples at 30, 60 and 90 centimeter. Experiment 2. The word texture describes the roughness or smoothness of an object. Soil texture is determined by feeling the soil. Soil texture is the portion of sand, silt, and clay in the soil. Soil texture is considered by most soil scientists to be the single most important soil property. Soil texture affects many land uses and cannot be changed without great cost and effort. Sand, the largest particle of the soil, is visible to the eye. It is gritty. Gritty means किरकिरा होता है, holds little water and is not sleek means चिकना नहीं होता है और sticky नहीं होता है जब wet होता है. Sand particles are between 2 and 0.05 millimeter in diameter. Medium sized soil particles are called silt. Silt, silt feels like flour or talcum powder. It holds moderate amount of water and has a somewhat sticky feel when wet. जब गीला होता है तो स्टिकी नेचर का होता है बट सैंड नहीं होता है. Silt particles are between 0.05 and 0.002 millimeter in diameter. The smallest particles of soil are called clay. Most individual clay particles can only be seen with the powerful microscope. Clay, clay feels sticky. Clay sticky फील होता है जब वेट होता है एंड हार्ड होता है जब ड्राई होता है. Clay is more chemically active than sand and silt. Clay particles are less than 0.002 millimeter in diameter. Laboratory analysis of soil texture are costly and take time.
सॉयल टेक्सचर का लैबोरेटरी एनालिसिस बहुत कॉस्टली होता है और टाइम भी लगता है। इसकी बजाय फीलिंग टेक्सचर बाय हैंड बहुत ही क्विक, फ्री और प्रैक्टिस होता है, जिससे हम इजीली चेक कर सकते हैं और एक्यूरेट होता है। सो द टू बेसिक स्टेप्स इन द टेक्सचर बाय फील मेथड आर shown. After complete After completing these two steps and following the flow chart, so this is the step follow करने हैं. Check the soil texture by feel method. Why is soil texture important? Soil texture is one of the most important properties to know how to measure. और ये अफेक्ट करता है केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सॉइल प्रोसेस and properties such as available water holding capacity, water movement to the soil strength, how easily pollutants can leach into groundwater, and the natural soil fertility. Soil properties related to texture. So divided in coarse, medium, and fine. Water storage, low, medium, fine. So कुछ properties हैं texture से related. These related to texture. So you have to all write it. Then soil structural classes. Separate in size. Sand size 2 to 0.05 mm. Silt 0.05 to 0.002. Clay less than less than 0.002. For analyzing soil texture by feel. So this is the flow chart. Experiment 3. Objective determination of soil pH and electrical conductivity. Scope. This method utilizes one sample preparation procedure for determination of pH and electrical conductivity in soil and soil-like media. pH is an operational defined measure of the H plus ions that are active in soil science solution. An EC provides an operationally defined measurement of a soil salinity equal to minus log H plus. Electrical conductivity is a measurement of solution ability to conduct electricity with units reported in deciments. Then laboratory control sample. It is an intra-laboratory developed sample whose true value is approximated by the average of repeated measures. Duplicate samples. A duplicate test involves splitting a sample into two subsamples and processing each through the same sample preparation procedure in order to determine the precision of the method. डुप्लीकेट सैम्पल्स अ डुप्लीकेट टेस्ट में ये इन्वॉल्व रहता है, इसमें हम स्प्लिटिंग सैम्पल मीन्स इसको डिवाइड कर देते हैं into two sub samples and processing each through the same sample preparation procedure in order to determine the precision of the method. Equipment and supplies. pH meter and procedure. Weigh 10 gram soil and 20 ml di to 50 ml disposable
centrifuge tubes to make a 1:2 soil deionized water solution. Then standard operating procedure, pH and electrical conductivity in soil and soil-like media. Soil water environmental laboratory वर्जन सेकंड. फिर इसको रेसिप्रोकेटिंग शेकर में रखेंगे फॉर 30 मिनट्स. रिमूव रिल अनकैप एंड लेट स्टैंड फॉर 10 मिनट्स. देन कैलिब्रेट pH meter using pH 4, 7 and 10 buffer solution according to manufacturer recommendation and record slope on the analysis sheet. Then insert the electrode directly into the soil suspension but not touching the bottom of the tube. Allow meter to stabilize and read pH. Rinse electrode. And some points are: turn bottom left knob into upright position and bottom right knob to the 2 meter setting. Then pour 6 ml of EC standard into 15 ml Falcon tube. After this, then adjust temperature coefficient knob until reading matches value on better of EC standard. Then quality control, calculations, observations, unit conversions, 1000 micromole is equal to millimole. 1 millimole is equal to 1 decibels. वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.